Today we will learn about pronouns. What are pronouns? Pronouns are the words that are used in place of nouns. Pronouns वे words होते हैं जो nouns की जगह पर use होते हैं. Like he, she, it, they, we, mine, yourself. These are few pronoun words. Pronouns are used to avoid repetitions. बार बार नाउन वर्ड्स को रिपीट करने की जगह हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. राहुल हैज अ फुटबॉल. राहुल प्लेज विद द फुटबॉल. In this sentence, we are repeating Rahul and football, which are the nouns. After replacing pronouns, we can rewrite Rahul has a football and he plays with it. Here pronouns are used. There will be a series of pronouns in which we will learn about different types of pronouns in 3 parts. In this first part, we will learn about 3 types of pronouns: personal pronouns, possessive pronouns, and reflexive pronouns. Personal pronouns. Pronouns that replace the names of persons, animals, or things are called personal pronouns. जब हम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. लाइक ही, शी, वी, यू, इट, दे etc. are personal pronouns. For example, Mohit likes to play. After replacing Mohit, we can write it as he likes to play. Use of personal pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ डिपेंड करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है, जेंडर मेल या फीमेल, और नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स इन क्वेश्चन, उस सेंटेंस में कितने लोग या कितनी चीज़ों के बारे में बात हो रही है. A personal pronoun that comes in place of the subject in a sentence is called subject pronoun, like I, you, it, he, she, they. जो personal pronoun subject की जगह पर sentence में आते हैं उन्हें subject pronoun कहते हैं, like I, you, it, he, she, they. A personal pronoun that comes in place of object in a sentence is called object pronoun, like me, you, hum, her, us, it, them. जो personal pronoun sentence में object की तरह यूज़ होता है उसे object pronoun कहते हैं. For example, my aunt has invited us for dinner. In this sentence, my aunt is the subject and us is the object of the sentence. Pronouns can be classified as first person, refers to the person speaking. I, we. First person वो होता है जो sentence में कुछ बोल रहा है. We use I and we for it. Second person refers to the person spoken to you. सेकेंड पर्सन उसे रेफ़र करता है जिससे हम कोई बात कर रहे हैं, इसके लिए हम you का यूज़ करते हैं. थर्ड पर्सन रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट. जिस पर्सन के बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, लाइक ही, शी, दे, इट. To understand the concept of personal pronouns, let's go through this chart. First person in singular form. If it is a subject, we will write I, but if object, we will write me. For second person, we will write you in subject and object also. In third person, we will use he, she or it in the subject and him, her or it in the object. If it is plural, for first person we will use we in subject and in object we will use us. For second person we will use you in both the cases, and in third person we will say they for the subject and them for the object.
Here are few examples of personal pronouns. You should go through them for better understanding of personal pronouns. Possessive pronouns. A possessive pronoun is a pronoun that is used to show possession or ownership. जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. Words like mine, yours, his and hers are used for singular form and ours, yours is used for plural form. Remember few points before using possessive pronouns. We use mine and ours for the things that belong to us. जो चीज़ें हमारी हैं उनके लिए हम mine and ours का यूज़ करते हैं. We use his, hers, yours and theirs for the things that belong to others. जो चीज़ें दूसरों की हैं उनके लिए हम his, hers, yours and theirs का यूज़ करते हैं. We don't use apostrophes with possessive pronouns. Possessive pronouns के साथ हम apostrophes का यूज़ नहीं करते हैं. Examples of possessive pronouns. Go through these examples and practice them for better understanding of possessive pronouns. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used to refer back to the same person or thing. जब किसी काम करने का असर खुद सब्जेक्ट यानी करने वाले पर पड़ता है उसे reflexive pronouns कहते हैं. Words like myself, yourself, himself, herself, itself is used in the singular form and ourselves, themselves are used in the plural form. Use of reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used when the subject and the object of the verb refer to the same person or thing. जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग को रेफर करता है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. इन दिस एग्जाम्पल शी मेड हर सेल्फ अ कप ऑफ कॉफ़ी. शी इज़ द सब्जेक्ट, मेड इज़ द वर्ब एंड हर सेल्फ इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. सो वी आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड. Reflexive pronouns are often used with by to mean alone or without any help. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ हम बाय का यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई भी काम अकेले या बिना किसी हेल्प के हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ही मेड द डिनर बाय हिमसेल्फ. उसने अपना डिनर अपने आप बिना किसी हेल्प के बनाया है इसलिए यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. These are few examples of reflexive pronouns. These will help you to understand the concept better. Let's summarize what we have learned till now. Pronouns replace nouns and avoid repetitions. Personal pronouns replace the names of a person, animal or thing. Reflexive pronouns refer to the same person or thing. Possessive pronouns shows possession. Let's practice. Write the type of pronouns in each sentence and write the answers in the comment box.